Ramsar Convention. Ramsar Convention is actually one of the very important global environment agreement. ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व हैं और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, दिस इज कॉल्ड रामसर बिकॉज दिस एग्रीमेंट टुक प्लेस एट रामसर, जो ईरान की एक सिटी है. बिकॉज ये एग्रीमेंट वहाँ पर परफॉर्म हुआ था, वहाँ पर इस पे अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई थी, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं. So the treaty was negotiated in 1960s by countries and NGOs. यानी ये सिर्फ नेशंस के दरमियान नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें इन्वॉल्व थी फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर्स. To avoid the increasing loss and degradation of wetland habitats for migratory water birds. रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड कन्वेंशंस भी कहते हैं. यहाँ पर क्योंकि वर्ड वेटलैंड है, वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरह का पानी होता है जो माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है. सो इस ट्रीटी में देर आर 18 नेशंस and it was adopted in the Iranian city of Ramsar on 2nd February 1971. मगर ये कन्वेंशन एक्ट यानी ये कन्वेंशन एक्चुअली कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कन्वेंशन कब फोर्स में आया, वो आया है दिसंबर 1975 में. द कन्वेंशंस मिशन इज द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल and national actions and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world. In short, the overall mission, the overall objective of this convention is to preserve, is to protect, is to conserve every type of water so that this can be utilized again and again. The convention uses a broad definition of wetland which includes all lakes and rivers, underground aquifers, swamps and marshes, wet grasslands, peatlands, as well as oases, estuaries, deltas, tidal flats, mangroves, etc. Again, it includes every type of water, चाहे वो standing है, चाहे वो floating है, चाहे वो brackish है, चाहे वो marshes हैं, चाहे वो सॉल्ट वाटर है, हर तरह का पानी इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इसमें इंक्लूड होता है. जहाँ पर वाटर बर्ड्स, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स, जहाँ पर वेरियस तरह के एनिमल्स आके सरवाइव करें और उनको एक सर्वाइवल प्लेस मिले, उसको वेटलैंड्स कहा जाता है. द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कन्वेंशन इज वेटलैंड्स आर अमंग द मोस्ट डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स. दे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज and they actually supply all the fresh water that we have. Wetlands continue to be degraded and converted to other uses. Humans की intervention की वजह से humans ने इन wetlands को destroy करना शुरू किया है just for their own purposes और their own uses. इन wetlands की degradation हो रही है. इसी वजह से कई ऐसी migratory birds हैं जिनका नंबर डाउन हो रहा है और वो threatened species declare हो रही है. The three important pillars of the convention, they are number one, the work towards the wise use of all their wetlands. इस कन्वेंशन में जितनी भी नेशंस, जितनी भी पार्टीज थी जो इस कन्वेंशन का पार्ट बनी, they are at an agreement that they must work together. और उनको इकट्ठे किस लिए काम करना है, ताकि वो हर तरह की स्ट्रेटजी को ऑप्ट कर सकें, उसको वाइजली इम्प्लीमेंट करवा सकें जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन. एंड दे डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. अगर उनके मुल्क में, अगर उनकी जगह पर, अगर उनके एरिया में कोई ऐसा वेटलैंड है जो सिग्निफिकेंटली बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंटली एनिमल्स को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको उस लिस्ट में शामिल किया जाए जिन वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हासिल है. एंड द थर्ड पिलर इज टू कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री
wetlands, shared wetland system and shared species. Wetlands वो एरिया होते हैं जहाँ पर the main controlling factor is water. So actually water एक ऐसा limiting factor है, water एक ऐसा important factor है जिसके ऊपर वहाँ के animals, वहाँ की plants as well as वहाँ की habitat dependent होती है. So by definition, the wetlands are the area where water is the primary factor controlling the environment and the associated plants and animals residing there. They occur where the water table is at or near the surface of land or where the land is covered by shallow water. So there must not be a deep water, there is just a shallow water body जिसको हम wetland कहते हैं. Wetland को properly अगर हम declare करें तो इसको Ramsar site भी कहते हैं. This is actually this is called Ramsar site because there is a convention called Ramsar Convention. उसके accordingly wetland को properly अगर हम define करें तो by definition these are the areas of marshes, fen, peatlands or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide must not exceed 6 meters. In short, wetlands वो जगह है जहाँ पर पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पानी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उसको आप वेटलैंड कहेंगे, चाहे वो मार्श है, चाहे वो सॉल्टिश वाटर है, चाहे वो पानी फ्लो में है, चाहे वो पानी स्टैटिक है, किसी भी तरह की वाटर बॉडी को हम वेटलैंड कहते हैं अगर वहाँ पर एनिमल्स को और माइग्रेटरी बर्ड्स को वहाँ पर रेफ्यूज मिलती है तब हम उसको वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं. पानी की कैटेगरी के हवाले से, पानी की टाइप्स के हवाले से वेटलैंड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और जो रिकग्नाइज टाइप्स हैं देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स. दे आर मेरीन, दे आर एस्चुरीन, दे आर लैक्स्ट्रीन, रिवराइन एज वेल एज पेलेस्ट्राइन. इन केस ऑफ मरीन, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर सारा सी वाटर होगा. सो कोस्टल वेटलैंड्स इंक्लूडिंग कोस्टल लेगून्स, rocky shores and coral reefs. In case of estuaries, they are including deltas, they are including tides, tidal marshes as well as mangrove swamps. In case of lacustrine, they are wetlands associated with lakes. Riverine, wetlands along with rivers and streams. Palestrine, wetlands that lack flowing water, they are marshy, swamps and bogs. Wetlands, these are the water bodies where the primary and the important factor or the limiting factor, the controlling factor is water. वहाँ पर मौजूद एनिमल्स और प्लांट्स मेजरली डिपेंड कर रहे होते हैं उन वाटर बॉडीज़ के ऊपर, तो इस हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. It is considered that they are the world's most productive environment, and because they are the most productive environment, thus they are providing us multiple resources. They are the source of recreational and tourism activity as well as they are providing us economic benefits. With reference to the recreational activities, they provides us the site to view the birds because wetlands ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर migratory birds visit करते हैं. Wetlands provide refuge to the migratory birds. So हम उनको देखकर एक fun feel करते हैं. This is a recreational activity. उनकी photographs की जा सकती हैं. उनको अगर वहाँ allow हो तो उनको hunt भी किया जा सकता है. Similarly, because wetlands में क्योंकि दिस इज़ अ वाटर बॉडी तो ऑब्वियसली फ़िश भी वहाँ सर्वाइव करती है, सो वहाँ पर फ़िशिंग भी एक फ़न एक्टिविटी हो सकती है. सो हाइकिंग, फिशिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी एज वेल एज हंटिंग
ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वेटलैंड्स के साथ अटैच्ड. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द फ्लड प्रोटेक्शन, बिकॉज वेटलैंड्स वो एरिया हैं जहाँ पर जो मार्शेस भी इंक्लूड होते हैं. तो ये एक दलदली इलाका भी हो सकता है, दलदली एरिया भी हो सकता है. तो इस हवाले से दे सोक अ लॉट ऑफ वाटर, so they act as a natural buffer. They act as a natural buffer, soaking up and storing a significant amount of flood water. A wetland can typically store about 3 acres feet of water or 1 million gallons of water. तो फ्लड की प्रोटेक्शन इस हवाले से वेटलैंड वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं. अगर डिफरेंट जगहों पर फ्लड के रास्ते में वेटलैंड्स आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी वेटलैंड अपने अंदर सोक कर लेगा और जो इलाका जात हैं उनको नुकसान कम से कम होगा. Wetlands are the cradle for biological diversity. They are the home for the biological diversity. They provide a refuge for the biological diversity. They support a high concentration of various animals. The animal actually they are ranging from the invertebrate to vertebrate. अब invertebrates में various तरह की insects आ जाती हैं. इसके अलावा vertebrates की अगर हम बात करें, they includes the fish, amphibian, reptiles, birds and mammals. So there is a long range, there is a huge range of animals जो wetland support करते हैं. Similarly, they are providing the water and primary productivity upon which countless species of plants and animals depends for the survival. Definitely they are the source of water. So इसी पानी को कई जगहों पर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो फसलें हैं वो मैसर आती हैं और प्लांट्स और एनिमल्स उस पर अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं. Wetlands are also important storehouse for the plant genetic material because वहाँ पे वेरियस तरह की वेटलैंड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं जिनसे हम वेरियस तरह की मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे वेरियस तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं. तो इसलिए ये एक जेनेटिक प्लांट्स के हवाले से एक जेनेटिक रिसोर्सेज के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं. दे आर द सोर्स ऑफ फूड एज वेल. फॉर एग्जांपल राइस, दिस इज़ अ वेटलैंड प्लांट और ओवरऑल जो वर्ल्ड है दैट इज़ इन मेजर डिपेंडेंट अपॉन द राइस एज अ फूड. फिशरीज इज़ अ बिग बिजनेस. सो इस हवाले से फिशरीज ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फिश हार्वेस्ट is linked to the health of the wetland area because fish ने survive ही water bodies में करना है. तो अगर ये water bodies exist करती रहेंगी without any pollution exist करती रहेंगी तो fisheries का जो business है वो भी grow करता रहेगा. Agriculture through the maintenance of water tables and nutrient retentions in the flood plains. इसके अलावा जो benefits यहाँ से wetland से हासिल किए जा सकते हैं they include the timber and other building material, energy resources हैं such as peats and plant matter, wildlife resources हैं. A very important and significant thing which we obtain from the wetland is the herbal medicines. हम इनको wetland medicines भी कह सकते हैं. इन ये medicines ना सिर्फ हम plant से extract कर रहे हैं बल्कि animals भी इसका important source बनते हैं. Like for example, we all are aware of leeches, जिनको हम जोंक कहते हैं. ये basically कई ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जहाँ पर लीचीज़ को अप्लाई किया जाता है और उन डिजीज़ेज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. लाइक ये दे आर इन्वॉल्व इन एब्सेसेस, पेनफुल जॉइंट्स, ग्लूकोमा, वेनस डिजीज़ेज़ एंड थ्रोम्बोसिस. क्योंकि लीचीज़ की अमाउंट वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा होती है, ये उस एरिया में ग्रो करती हैं, इसीलिए वहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर कर अप्लाई करवा सकते हैं फॉर दीज डिजीज़ेज़. इसी तरह अगर हम वेटलैंड प्लांट्स की बात करें जो मेडिसिन में इन्वॉल्व हैं तो वाइट विलो इज़ अ रिवराइन प्लांट विच इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सर्टन मेडिसिन. दिस इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज़ कॉल्ड एज सैलिसाइक्लिक एसिड. और सैलिसाइक्लिक एसिड के बारे में जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो एस्पिरिन के हवाले से है. दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एस्पिरिन. Salicylic acid is actually the precursor of aspirin and this is used in various type of skin care treatments. Wetlands. Every wetland cannot be declared as Ramsar site.
For the declaration of Ramsar site, which are actually the wetlands of international importance, there are certain criteria which are set by the Ramsar Convention. इन क्राइटेरियाज में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है वहाँ का एनिमल, वहाँ पर सपोर्ट होने वाले प्लांट्स और वहाँ की वाटर क्वालिटीज़. सो दिस इज़ दी biodiversity which is supported by the wetland, the uniqueness of the wetland, the flora, the fauna, as well as the limnology of that wetland. That means the water quality of that wetland. There are 9 criteria which are, if present, the wetland is considered to be a Ramsar site or a wetland of international importance. इन 9 क्राइटेरियाज को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. दे आर डेजिग्नेटेड एज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. Within the groups, the criteria are sometimes based on specific fish. The criteria is sometimes based on specific birds. Criteria is based on the type of water present in that particular wetland. Regarding the group A, these are the sites containing representative, rare or unique wetland types. Group A में criteria 1 included है और by definition, if a wetland contains a representative, rare or unique example of natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region. Group B, these are the sites of international importance for conserving biological diversity. For the group B, following criteria based on the species and ecological communities. यानी आगे आने वाले जो क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया 1 को छोड़ के जो ग्रुप ए में एडेड है, उनके हवाले से जो इम्पोर्टेंस है वो स्पीशीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटी के है. Criteria 2, a wetland should be considered internationally important if it supports vulnerable, it supports endangered, it supports critically endangered species or threatened ecological community. Criterion 3, a wetland should be considered internationally important if it supports population of plants and or animals important for maintaining the biological diversity of a particular biogeographic region. Criteria 4, again, a wetland is considered to be internationally important if plants or animals at a critical stage in their life cycle. In any stage of their life cycle, they found refuge at a particular wetland. That wetland is considered to be internationally important. They are providing refuge during the adverse conditions. Now, the rest of the criteria, they are specific and they are based on the water birds. That includes criteria 5. A wetland is considered to be internationally important if it regularly supports more than 20,000 or more birds. Criteria 6, a wetland should be considered internationally important if it regularly supports 1% of the individual in a population of one species or subspecies of the water bird. Now the criteria depends upon the specific fish. This is criteria number 7. A wetland should be considered internationally important if it supports a significant proportion of indigenous fish, subspecies, species, or family life history stages. This criteria also includes species interactions, population that are representative of wetland benefits. They are of the values and thereby contribute to biological diversity. Criteria number 8, a wetland should be considered internationally important if it is an important source of food
for fish, spawning, ground and nursery, as well as it provides a migration pathway on which fish stocks either within the wetland or elsewhere. The last criteria is based upon the other taxa. So this is criteria number 9. A wetland is considered to be internationally important if it supports 1% of the individual in a population of one species or subspecies of wetland dependent non-avian species.